अभी किसका टोटल लिया 1 2 3 का. नाउ नेक्स्ट वन यू टेक टोटल ऑफ दिस 3. ओवरलैपिंग आएगा 7 + 2 + 5 and write it in the third year. सेंटर में कौन है ये वाला? Write the total in the center. 7 + 2 9, 9 + 5 14. नेक्स्ट ऑब्वियसली किसका टोटल लेंगे अभी? नेक्स्ट टोटल किसका लेंगे? 2 5 and 4 that is 11. 2 5 4 yes 11. Next what will take total of? 5 4 9 18. Last again dash. So in 3 years, in case of 3 years total में first one क्या आएगा? Dash. Always whenever you are doing 3 year, first year will be dash and last year will be dash. Okay, now dear student, tell me the 17 is a total of how many figures? 17 is a total of how many figures? 17 was a total of 3. So अभी average निकालना है. Average means what we will do? First dash 17 divided by 3 and get the answer. 3 5s are 15, left 2, 3 6 are 18, 3 6 are 18, 5.66. Clear? 6 7 yeah. Round off करेंगे तो 6 7. 5.6666. Then this 14 also divide by 3. 14 also you divide by 3. 4.67. Next 11 also you divide by 3. 3.67. 18 also you divide by 3. 6. हो गया मूविंग एवरेजेस. सम ओवर 3 year moving average. Last one dash. This is the answer. 3 year moving average. हेलो, इजी था ना? इजी था या नहीं था? आएगा, आगे आएगा बेटा, आगे आएगा. कौन था वो? ध्रुव. आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट. अब जब आएगा तो टोटल्स लेना है. ध्रुव, यू हैव प्रॉब्लम विथ विच कॉलम? नहीं, एनीवे यू आर हैविंग प्रॉब्लम विथ विच कॉलम? लेट मी नो. आई एम राइटिंग कॉलम नंबर्स. वेट, आई एम राइटिंग कॉलम नंबर 1 2 3 and 4. आराम से अमित, आराम से करता हूं. 5 years का चाहिए, 5 years का भी करता हूं. ध्रुव, this data will be given, year will be given, this data will be given. The first 2 columns are given. Dhruv, column 1, column 2 will be given to you in the question. Mir, I didn't get you. Sir, so in every year there would be DAS. What do you mean by DAS? Dash. Yes. Very first year will be dash. Very last year will be dash. Now, let me explain to that Dhruv. Yes. First, आएंगे सारे करेंगे दोस्तों, डरो मत. 4 years also I will do for the same data. Dhruv, being it is 3 years, add this 3 years. ये तीनों को ऐड कर. 7 8 and 2 को ऐड कर. How much you are getting?
17 and write it in the center. It is the addition of 1, 2 and 3. So 2 is in the center. So write in the center 17. First dash. First you don't write anything. Dash. That 17 we are writing it here. Center mein. Second here. Clear this point? 17 clear? Next. Now you take total of next 3. Exclude 8. 8 को निकाल दे और अगले 3 का टोटल ले. ये 3 का टोटल 7, 2 and 5 total 14 and write it here. Below 17 you write 14. Clear this also? Similarly the next one. Now you take total of 2, 5 and 4 and write down which is 11. 2 plus 5 7, 7 plus 4 11. So that is 11. Then you take next 3. This 3 and add 18 and right here. Last one again dash. In 3 here, first and last always will have a dash. Through clear now this part? Now these are the totals. 17 is the total of how many numbers? Dhruv? 17 is the total. Total of how many numbers? How many numbers you added? 3. So divided by 3. 17 divided by 3 is this answer. 5.66. 17 divided by 3 is this. 14 divided by 3 is this. 11 divided by 3 is this. And 18 divided by 3 is this. Clear, Dhruv? Clear? Anybody else also having problem? Abhi samajh mein aa gaya kya? Now, I'll come to 4 year also, but let me come to 5 year first. Let's come to 5 year. 4 years पे भी आता हूं मैं. First 5 years. 5 years में किसका टोटल लेना पड़ेगा? 5 का. First 5 का टोटल ले लो. First 5. 1, 2, 3, 4, 5. First 5 का टोटल कितना आ गया? 22. Write in the center. So where will write? In front of first year, second year, third year, fourth year, fifth year. किसके सामने लिखेंगे? Who is center? 5 का center. Who is center? 3. So write it there. कितना टोटल आया? 8 plus 7, 15, 22. In 5 years, you will have 2 dash at the top. Okay. Now next 5 को ऐड करो. 7 से चालू करो और 9 तक ऐड करो. 26 आ रहा है क्या? 7 and 2 9, 9 and 5 14, 14 and 4 18, 18 and 9. कुछ गलत किया क्या मैं? 5 7 8 9, 9 and 5 14, 18, 27, 26. 26 आ रहा है, 27 आ रहा है. फर्स्ट टोटल बराबर है क्या? 8 एंड नहीं, ये टोटल गलत है. 22 नहीं है, ये 26 है. हेलो, दिस टोटल इज 26. फर्स्ट 5 का टोटल 8 plus 7 15, 15 and 2 17, 17 and 5 22 and 4 26 आ रहा है. करेक्ट. हाँ, नेक्स्ट टोटल 27.
लास्ट 2 डैश। 3 इयर्स में कितने डैश आते हैं? 3 इयर्स में कितने डैश आते हैं? 3 इयर्स में 1 and 1, 1 at the top, 1 at the bottom, total 2 dash, 1 at the top, 1 at the bottom, total 2 dash। 5 इयर्स में 2 at the top, 2 at the bottom, total 4। अभी 26 is the total, here dash, here dash, 26 is the total of 26 कितने का टोटल है? हाउ मेनी नंबर्स? 5, so divided by 5, 26 divided by 5, 5.2 करके देखना है, देख लेना। 5.2, 27 divided by 5, 5 5s are 25, 5 4s are 20, 5.4, again 2 dash। 5 years moving average over। समझा क्या? 5 years भी समझ में आ गया? थ्री इयर्स भी समझा या 5 इयर्स भी समझा? अभी 4 इयर्स समझा रहा हूं। 5 इयर्स में ऑलवेज 2 डैश, 5 इयर्स में ऑलवेज। अरे 5 करेगा तो सेंटर में कौन आएगा? 1 2 3 4 5, 5 का सेंटर कौन है? आता बता रहा हूं, 2 मिनट रुको ना। थर्ड वन इज इन द सेंटर, इसके ऊपर कितने? थर्ड इज सेंटर, सो हाउ मेनी आर देयर अप? 2, तो 2 डैश आएंगे। और जब 3 रहेगा 1 2 3, 1 2 3, तो इसका सेंटर कौन? 2 इज द सेंटर 1 2 3 में, 2 इज द सेंटर। 2 के ऊपर कितने हैं? 2 इज द सेंटर 3 में, ऊपर कितने हैं? 1, तो डैश। सेंटर के ऊपर वाले डैश, फर्स्ट सेंटर के ऊपर वाले डैश। क्लियर? क्लियर? 4 ईयर थोड़ा सा अलग है। 4 ईयर थोड़ा सा अलग है, करते हैं अपन। अब लास्ट कौन सा कर रहे हैं? 4 ईयर। हेलो, पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एमबीए एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। विच वन? 4 ईयर। 4 ईयर किधर किया था? 4 ईयर किया ही नहीं अपन ने। अपन 3 ईयर किया एंड 5 ईयर किया ना। हेलो, हम लोगों ने कौन सा किया? हाँ, डाउट कौन सा डाउट? Who is having doubt? Shabazz, what is the doubt? हाँ, चलो 5 इयर्स। शाबाश, 5 इयर्स रहेगा तो हु इज इन द सेंटर? 5 इयर्स में हु इज इन द सेंटर? व्हाट इज सेंटर? 5 का सेंटर। शाबाश, 5 का सेंटर। Three is the center. Now above 3, how many are there? 3 के ऊपर कितने जन है? 2, तो दोनों को डैश।
somebody asked me कितने डैश, उसका रीजन दिया मैंने, 3 रहेगा, 3 1 2 3, इसका सेंटर कौन, 1 2 3 में सेंटर कौन, शाबाश, 1 2 3 में सेंटर कौन, 2 इज द सेंटर। अभी 2 के ऊपर कितने जन है, हाउ मेनी ऑफ देम आर देयर अबव 2, 1, तो 1 डैश, फर्स्ट सेंटर के ऊपर के डैश, सो 5 में ऑलवेज 2 डैश एट द टॉप, 5 में 2 डैश एट द टॉप, 2 डैश एट द बॉटम, 2 डैश एट द बॉटम ऑलवेज। और 3 इयर्स में हाउ मेनी डैश, 1 डैश एट द टॉप, 1 डैश एट द बॉटम ऑलवेज, बस उतना ही। अब आते हैं 4 इयर्स में, और ये आगे आएगा भी, हमको सम सॉल्व करने, इतना ही करना है। तो मूविंग एवरेज इज नॉट डिफिकल्ट, मूविंग एवरेज इज इजी। अभी 4 ईयर में ऑब्वियसली 4 ईयर में क्या करना पड़ेगा, कितने को ऐड करना पड़ेगा, 4 को। चलो ऐड कर दे पहले 4 को, ये 4 को ऐड करो, 8 + 7 + 2 + 5, कितना आंसर आया, 22। राइट इन द सेंटर, राइट इन द सेंटर, तो आप ना 1 के सामने लिख सकते हैं, ना 2 के सामने लिख सकते हैं, ना 3 के सामने, ना 4 के सामने, सेंटर इज हियर। इधर टोटल लिखो 22, इधर लिखा मैंने 2 और 3 के बीच में लिखा, समझे क्या, in between 2 and 3, not in front of 2, not in front of 3, in between. Now next 4 को ऐड करो, 7 2 5 4, 7 2 9 9 5 14 18, किधर लिखोगे, 3 और 4 के बीच में, फिर नेक्स्ट 4 को ऐड करो, 2 5 4 9, 2 5 7 7 4 11 9 20, किधर लिखो, 4 और 5 के बीच में लिखो 20। ओके, दैट्स ऑल। आगे नंबर नहीं है तो रुकेंगे। 22 इज एडिशन ऑफ हाउ मेनी नंबर्स, 22 इज एडिशन ऑफ हाउ मेनी नंबर्स, 4, 22, सो 22 को डिवाइड बाय 4, 22 डिवाइड बाय 4, 4 नंबर्स का एडिशन है तो 22 डिवाइड बाय 4, 5.5, हाँ डैश विल कम ना, इधर इधर भी 2 डैश आएंगे, ओके, डैश चाहिए तो 2 आएंगे, इधर भी 2, ओके। चलो 5.5, नेक्स्ट 18 डिवाइडेड बाय 4, 4.5, 20 डिवाइडेड बाय 4, 5 आएगा। बट हियर आंसर इज नॉट ओवर, फर्दर नाउ एड दिस 2, ये 2 को ऐड करो, 5.5 एंड 4.5, 5.5 एंड 4.5 ऐड, लिखने का नहीं, कितना हो गया, 10 हो गया ना, डिवाइड बाय 2, 5, राइट इट हियर। ये किसके सामने लिखा, थर्ड के सामने लिखा, इनका सेंटर था ना, तो 5 किधर लिखना है,
इधर बीच में लिखना है, मतलब ये 3 वाले लाइन के सामने आएगा, इन दोनों के बीच में। नाउ ऐड 4.5 एंड 5, 4.5 एंड 5 को ऐड करो, 9.5 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, 2 को ऐड किया तो डिवाइड बाय 2, 9.5 डिवाइडेड बाय 2, 4.75। चेक कर लेना, हो गया 4 ईयरली मूविंग एवरेज। आएगा आगे, अभी टेंशन मत लेना, करेंगे हम लोग, बाद में ठीक से करेंगे। ओके चलो, and then list square method, सबसे difficult या सबसे time consuming is this method. It is best also and time consuming also. This is easy, ये easiest, first one is easiest, ये easy and time consuming. Nothing is difficult as such, time लगेगा। ओके चले आगे। In time series, there is an assumption past patterns in the variable to be forecast will continue unchanged into future. आपका पास्ट जो परफॉर्मेंस है वैसे ही चलते रहेगा। ओके, past pattern in the variable to be forecast will continue unchanged into the future. हेलो हेलो, समझ में आ गया क्या? When you are forecasting about future, what will assume? Past, past जो भी है, past जो भी है, that pattern will remain unchanged. Pattern will not change. That is the assumption. Now here comes the first one. Exercise 4.1, page number 66, question number 1. The following data gives production of bleaching powder in thousand for the years 1962 to 1972, 62, 63, 64, 65, 66 और इन लोगों ने 67 लिया। They can write them in one line. जगह नहीं था करके बुक में they have done it in 2 lines, 67, 68, 69, 70, 71, 72 and fit a linear line by graphical method to the above data. कौन सा मेथड से करने को बोला है? Which method? Graphical method. Okay. Method will be given to you. Graphical method. Yes. Graphical. We don't require graph paper. On the paper itself, line paper itself. आपके notebook में line paper में graph बनाने, I'm showing you how to make it. तो ये डेटा लिखा मैंने, जो डेटा था ना, आई कॉपीड दैट डेटा 1962 टू 72। कितने साल का डेटा है क्वेश्चन में? हाउ मेनी इयर्स डेटा इज दैट? नंबर ऑफ इयर्स 62 टू 72, 11 इयर्स हो जाएगा। गिनो गिनो, 11 हो जाएगा। ओके, तो दिस द सेम डेटा आई रोट हियर, वही डेटा है, I wrote in 2 lines, 62 to 72. Okay. Now, draw your x-axis and draw your y-axis. I'm waiting. You can see on your screen x-axis and y-axis. Draw this. Once done, let me know. Or let me draw first and then you will draw.
Mind you, here it is 1961, 0. 1962, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 on x-axis. Look at this data. ये सर्कल क्या है, देखो क्या लिखा मैंने. I am not writing this 0, 0. What I am writing? Hello? Our data starts from which year? Our data starts from which year? अपना डेटा कहां से शुरू हो रहा है? अपना डेटा is starting 1962. तो 1 year before that. Our data is starting with 1962. इधर ऊपर क्वेश्चन में 1962 है. So 1 year before that. (1961). So therefore 1961, 0. If you want, you can take here 0,